आपका ऑडियो म्यूट करना पड़ेगा। ऑडियो प्रॉब्लम है सर, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वीडियो छोरी खाली रिकॉर्ड। अच्छा, ठीक है ठीक है, यहाँ पे इन्होंने रिकॉर्ड कर रहा है। ओके सर, देखेंगे, इसको कट करो, फिर से स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट करना सर। हाँ, good morning everybody. Today the session is about artificial intelligence. This happens to be the third session from Microsoft. ये जो सेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थर्ड सेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। हमारे 2 सेशंस हो गए। Today's session is all about introduction to neural networks, in special perceptron. आज हम पढ़ेंगे न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है और इसमें पढ़ेंगे परसेप्ट्रॉन के बारे में। Every session starts with a pre-lecture quiz. हर सेशन pre-lecture quiz से start होता है। In this quiz you have got 3 questions. Each question has got 3 options. You have to answer one of them which is correct. If that happens to be wrong, you have to redo it. हर लेक्चर में, हर क्विज में 3 क्वेश्चंस होते हैं। प्री लेक्चर क्विज एक है, पोस्ट लेक्चर क्विज है। सेशन से पहले आपको एक क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं। You need to attempt one of them. If that is right, you have done well. If not, computer will respond that it's wrong. You have to redo it. Now today's session is about introduction to neural networks. Then we discuss about perceptron. The human brain is set of neurons, and artificial brain is nothing but artificial neural network. The brain is made up of a lot of neurons and it has got a network called as neural network. इंसान का जो भेजा होता ब्रेन होता वो कई चीज़ों कई न्यूरॉन्स का मिश्रण है और इसमें एक नेटवर्क होता, we call that as neural networks. एंड इसमें जो यूनिट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उसका नाम है परसेप्ट्रॉन। आपका न्यूरॉन का जो अल्टरनेटिव वर्ड जो यूज हो रहा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका नाम है परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है? इट्स एन एल्गोरिथम टू बी डेवलप्ड बाय ह्यूमन बीइंग। एक एल्गोरिथम डेवलप होगा इंसान से, इंटेलिजेंट इंसान से। द आउटपुट ऑफ दैट परसेप्ट्रॉन विल बी यस और नो। उसका आउटपुट या तो यस या तो नो रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक कप में वाटर है, एक कप में चाय है, आपको हाथ लगाने के बाद आपको महसूस होता है कि वो गर्म है कि ठंडा है। डिसीजन इज टेकन based on that whether to remove the hand or to continue with the hand. Decision is either a 1 or a 0 or yes or no or true or false. हमको डिसीजन लेना पड़ता परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम में कि क्या हम हाथ को निकालेंगे या हाथ को कंटिन्यू करेंगे। So perceptron is nothing but an algorithm. एक algorithm है, एक प्रोग्राम है, एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जिसके जरिए परसेप्ट्रॉन आउटपुट दे सकता कि आपका आउटपुट यस है कि नो है, या ट्रू है कि फॉल्स है, या 1 है कि 0 है। That is the definition of a perceptron. Now going down, one of the first attempts to implement something similar to a modern neural network was done by Frank Rosenblatt. This gentleman happens to be the author of artificial intelligence और author of perceptron. ये जो साइंटिस्ट है ये उनको author बोला जा सकता है और ये है कॉर्नल एरोनॉटिकल लैबोरेटरी में 1957 में 1950s में जो काम किया। It was a hardware implementation called Mark 1. इन्होंने न्यूरल नेटवर्क का जो इम्प्लीमेंट किया, द बेसिक हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट किया, उसका नाम है Mark 1. The objective of this, उसका क्या मकसद था कि डिजाइन टू रिकॉग्नाइज primitive geometric figures
such as triangle, squares, and circles. In the figure there, साइंटिस्ट बैठा हुआ है, उसके पीछे बैकग्राउंड में परसेप्ट्रॉन लिखा हुआ है. परसेप्ट्रॉन इज एन एल्गोरिथम. ऑब्जेक्टिव क्या था वहां पे कि रिकॉग्नाइज करो शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स, जैसे कि एक ट्रायंगल एक शेप है, सर्कल एक शेप है, स्क्वायर एक शेप है. इन तीनों में से वो फिगर कौन सा है पहचानना जरूरी था. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर जेंटलमैन. इन्होंने जो परसेप्ट्रॉन इंप्लीमेंट किया कि पहचानना था कि whether this is a triangle or not, whether this is a circle or not, whether this is a rectangle or not. That was the first level of perceptron design and development. उस वक्त की बात है कि जब आपका इमेज क्या होता था, उसका रेजोल्यूशन कम होता था. An input image was represented by 20 cross 20, 20 rows, 20 columns. So it is a matrix of 400. So image को आप इस हिसाब से लेते कि उसको rows and columns में लेते. 20 by 20 is nothing but 20 cross 20, which is equal to 400 cells. Matrix of 400 cells. Photo cell array. So the neural network had 400 inputs and one binary output. Binary output मतलब बाई का मतलब 2, बाइनरी का मतलब दो आउटपुट्स आएंगे, yes or no, true or false, or 1 or 0. 1 for yes or true and 0 for false or wrong. Right के लिए 1, wrong के लिए 0. A simple network containing one neuron, also called a threshold logic unit. एक ही न्यूरॉन रहेगा परसेप्ट्रॉन, एक ही परसेप्ट्रॉन रहेगा, तो उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड लॉजिक यूनिट. न्यूरल नेटवर्क वेट्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट है. जो परसेप्ट्रॉन का जो एल्गोरिथम लिखा जाएगा वो एक फंक्शन होगा, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन. और मैथमेटिकल फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स बोलेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल जो इनपुट है, और इसको एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाएंगे, उसको हम बोलेंगे वेट ऑफ द नेटवर्क, वेट्स बोलेंगे. तो एफ ऑफ एक्स जो बनेगा वो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट आएगा वो एक रिजल्ट आएगा. बट वहां पे जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डब्ल्यू, फॉर एग्जांपल वेट आपका 3 है, इनपुट एक्स है, 3x में 3 आपका वेट रहेगा. 3 इज नथिंग बट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ x. जो वेरिएबल को जो इनपुट को मल्टीप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क वेट. So neural network weights acted like potentiometers that is required manual adjustment during the training phase. मतलब कि एम्पलीफाई करने के लिए आप यूज करेंगे. जैसे कि वॉल्यूम को एम्पलीफाई करते तो जो नॉब होता गोल फिराने वाला उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर. तो फिजिकली ये साइंसदान ने एक पोटेंशियोमीटर यूज किया अपने नेटवर्क, अपने न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन करने में. And that potentiometer is nothing but weight of the network. For example, अगर आप वापस फिगर में देखेंगे तो if at all triangle is the input and triangle is given to the network. अब जो the scientist has got a finger on the knob. उन्होंने हार्डवेयर के किसी नॉब पे रोटेट करने का बता रहे हैं कि the moment you rotate, it gets amplified so that the recognition is possible in a better way. So x is nothing but one of these inputs, either a triangle or a square or a circle. वो input रहेगा, उसको हम नेटवर्क के थ्रू देंगे, हार्डवेयर सर्क्यूटरी के थ्रू देंगे, और वहां पे एक एम्पलीफायर होगा जिसका नॉब ह्यूमन बीइंग कंट्रोल करेगा, तो वो हिसाब से उसका आउटपुट आएगा. Now, a potentiometer is a device that allows the user to adjust the resistance of a circuit. जो आपका पुराने आपके पास वॉल्यूम कंट्रोल्स होते थे, पुराने आपके कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल्स होते थे, पुराने आपके लाइट इंटेंसिटी कंट्रोल्स होते थे. फैन का जो रेगुलेटर होता है वो भी एक पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर इज ए हार्डवेयर व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. जब सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज होगा तो बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, वोल्टेज भी चेंज होगा.
तो जैसा वोल्टेज चेंज होगा तो सिग्नल का लेवल बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इनपुट सिग्नल 5 वोल्ट आपका बेसिक पॉइंट है जो पे एक्सेप्टेबल लेवल है, so anything less than 2.5 is taken as zero, anything above 2.5 is taken as high. So 2.5 to 5 is taken as high and 0 to 2.5 is taken as low. Now coming down, perceptron model, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल है, इसको समझ गए तो फिर आगे हमारा सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। इसको समझने से आपका प्रोग्राम लिखना भी इजी हो जाएगा। प्रोग्राम वी कैन बी रिटन इन पाइथन, सी और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सपोज वी आर डेवलपिंग अ परसेप्ट्रॉन मॉडल, हम एक मॉडल बना रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का बेसिक मॉडल बना रहे हैं। वी आर मेकिंग अ बेसिक artificial neural network model. So suppose we have n features in our model. Feature number 1, feature number 2, feature number 3. For example, the corners of the figure is one feature. जैसे ऊपर देखेंगे, ट्रायंगल में 3 कॉर्नर्स हैं, रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स हैं, सर्कल हैज no corners. That is one feature. So suppose we have n features in our model, in which case the input vector would be a vector of size n. जितने आपके फीचर्स रहेंगे उतने इनपुट्स रहेंगे। A perceptron output तो एक ही रहेगा। Number of inputs can be many, whereas output is only one. Perceptron is a binary classification model. आपके पूरे inputs को लेकर classify करेगा कि whether this is a triangle or not, whether this is one or not, whether it's true or false. So that is, it can distinguish between two classes of input data. We will assume that for each input vector x, the output of a perceptron would be either +1 or -1 depending on the class. The output will be computed using the formula. Here output is written as y of x, and the function is weight matrix, the transpose of weight matrix. W of power t stands for transpose of weight matrix multiplied with x. तो मैट्रिक्स रहेगा, जितने इनपुट रहेंगे उस हिसाब से मैट्रिक्स बनेगा। जैसे ऊपर लिखा है 20 क्रॉस 20 is the vector input that you are giving. So here y of x is nothing but the output of perceptron, where f is a function, is a step activation function. F of x will have either +1 or -1 based on the input. अगर x की value, input value greater than or equal to 0 है, you declare it as 1 +1. If it is less than 0, you declare it as -1. Now training the perceptron. अब आप मॉडल का फॉर्मूला लिख ले, आप ट्रेन कैसे करें? To train a perceptron, we need to find a weight vector. हमें weight vector define करना पड़ेगा, क्योंकि x तो input है, y output है. Now we have to train the perceptron. To train the perceptron, we have to get the weight vector. To get the weight vector, or to design a weight vector W that classifies most of the values correctly, that is results in smallest error. This error is defined by perceptron criteria in the following manner. So to define your weight vector, we also supposed to define error of weight vector. Error of weight vector is defined as sum of a transpose of weights multiplied with x, that is input values, multiplied with time, that is the training values. Here, as defined, the sum is taken on those training data points I that results in the wrong classification. Because that is an error, wrong classification is what is taken as input. Xi is the input data and Ti is the -1 or +1, negative and positive examples accordingly. So if you go back to the figure, अगर आप एक ट्रायंगल को लेंगे और सर्कल को लेंगे या रेक्टेंगल को लेंगे, इसको आपको इमेज को क्लासिफाई करना पड़ेगा, इमेज को ब्रेकअप करना पड़ेगा इनटू रोज एंड कॉलम्स। दीज रोज एंड कॉलम्स में वहां पे कितना पोजीशन कवर्ड है, कितना पोजीशन अनकवर्ड है, उसको डिफाइन करते हुए आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा। टू बी मोर स्पेसिफिक, अगर आप रेक्टेंगल को देखेंगे तो आपका जो सेल्स रहेंगे, all the cells will have to give 1 1 1 because it is all occupied. Whereas in a circle, some of the cells should give you 1 and some of those cells should give you zeros. The corner,
जब आप सर्कल को एक मैट्रिक्स में लेंगे, the corners, all the four corners will not have the white area, will have the black area, whereas other cells will have white areas. If you look into a triangle, only on the left corner and the right corner data, on the left and the right corner data, major of them are having black areas and no white areas. So this is how you can classify that. You can recognize, you can write a perceptron, you can write an algorithm called perceptron, which would recognize these figures absolutely as either a triangle or a square or a rectangle or a circle. So here we are talking about error function. E of W stands for error function of weights, which is sum of transpose of weight vector multiplied with x inputs. Let's say x inputs are those white areas or black areas. Ti stands for values of the zeros or ones, or you can call them as -1 or +1. -1 is negative and +1 is positive. So we'll add the sum of values of positive and negatives. If the positive values are more, that is, white values are taken as positive, minus negative values are taken as black areas, then we can sum them up and define whether it is a triangle or a square or a rectangle or a circle. So this criteria is considered as a function of weights W, and we need to minimize it. We need to minimize what? We need to minimize the error. That is, error function output should be as low as possible. Often a method called gradient descent is used, in which we start with some initial weights and then at each step update the weight according to the formula. So weight transpose t plus 1, that is t plus 1 transpose of weight, is equal to transpose of weight minus mu multiplied with error differential of error. Here mu is the so-called learning rate, and del E of W denote the gradient or the difference, gradient or the difference of E. After we calculate the gradient, we end up with weight of t plus 1, t plus 1 transpose of weight, and is equal to transpose of weight plus sum of new times what is error function is replaced with xiti. This algorithm is in Python looks like this. अब इसका एक algorithm, the upper part is algorithm. Now this is the program for it. So the program in Python for perceptron looks like this, where you define a function which is called a strain, and the arguments inside जो bracket में लिखेंगे उसको हम arguments बोलेंगे. Positive examples, negative examples. Number of iterations is 100. You repeat this loop for 100, then eta is equal to 1. That nu or eta is the function, is the coefficient function used as 1. The weight function is defined as single row with 3 columns, 0, 0, 0. Initialize weights almost randomly as 0. For I in range, number of iterations. For I in, this how is the syntax. For loop जो लिखते हैं वो उसका syntax इस तरीके से है. And there are two, there are this particular range will work up to the number of iteration. For I 1 to 100 के बजाय I in range of number of iteration 100. Then the positive and negative values are calculated as positive is equal to random is a class with the choice of is the object with positive examples. Similarly, random dot choice negative examples is another object of a class random. Random is a function which is used to pick up the random values with choices of positive examples and negative examples, and they are stored back into a variable called as pos for positive and neg for negative.
Then z is another variable which is used to compute a perceptron output. So output is z here, which is got by np dot np multiplied np dot is a product is a dot of pos weight comma weights. So a dot is a function where the arguments are the positive and weights are the two arguments which is passed to a function called dot. Then it's submitted to a class to get negative positive combinations and get a result as z. So z is nothing but a combination of negative positive with argument as dot and as pos and weights. So this calculation gives you the positive values, and if this positive values is less than zero, if positive values is less than zero, then you classify that as negative. So very similar, if this output happens to be greater than equal to zero, you define that as negative. So here, if the value of output is less than zero, that is, all positive examples are classified as negative. If the value of z in the second part of the function, you are taking it as dot as a function, your arguments are negative and weights, then what you get is the value of z. If the value of z is greater than or equal to zero, you call that as positive values. Now the weight is nothing but the total weight is nothing but the weight minus the error weight is removed from that, eta times weights dot shape, then you get the output. And if this iteration is run for 100 times, then the error is subtracted for every iteration, then you return this weights. So weights is gives you the shape of that particular figure that you have submitted. तो जो हम फिगर सबमिट कर रहे हैं पाइथन को, इट विल वन ऑफ दोस थ्री इमेजेस. इस प्रोग्राम को इंटेलिजेंटली आप लिखिए with 100 iterations. जैसे 20 times 20 400 हो रहा था, हम 100 एज ए सैंपल लिए, इसमें 400 भी ले सकते हैं. Then you get your return as either a square, either a rectangle, or a circle, or a triangle. So this part of an algorithm, this part of the program tells you how you write the program in Python. You need not write the same program, but you can write your own program. आप अपना खुद का program भी लिख सकते हैं, या इस program को भी आप समझते हुए continue कर सकते हैं. So in this lesson you have learned about a perceptron. Perceptron क्या होता, एक algorithm होता, और इसका एक output होता जिसको हम -1 भी बोल सकते हैं, 0 1 भी बोल सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी बोल सकते हैं, यस नो बोल सकते हैं, राइट और रॉन्ग भी बोल सकते हैं. तो इसके बारे में हम पढ़े, विच इज अ बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल. मतलब दो आंसर्स आएंगे, यस और नो, इसको बाइनरी बोलते हैं. एंड हाउ टू ट्रेन इट बाय यूजिंग वेट वेक्टर्स. इसको हम ट्रेन कैसे करेंगे, ऊपर जो एल्गोरिथम लिखे, जो प्रोग्राम लिखे, वो क्या है, ट्रेनिंग मॉडल है, जिसमें एरर को मिनिमाइज करते हुए आपको आगे बढ़ना है. Now the challenge, if you would like to try to build your own perceptron, अगर आप अपना खुद का perceptron build करना चाह रहे हैं, तो Microsoft की तरफ से जो लैब है उसको जाकर के आप कर सकते हैं, जो Azure का मशीन लर्निंग डिजाइनर में है. मशीन लर्निंग हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन still if you want to go for it, you can take the challenge. The session ends up here with a post lecture quiz. इसमें एक post lecture quiz है, इसको attempt करने से आप understand कर सकते हैं where you have what you have learned, how you have learned. Lastly, there is an assignment. In this lesson, we have implemented perceptron for binary classification task, and we have used it to classify between two handwritten digits. In this lab, we are asked to solve the problem of digital classification entirely, that it determine which digit is most likely to correspond to a given image. तो हम अब जो इमेज कर रहे थे वो ज्योमेट्रिक फिगर्स थे, बट असाइनमेंट जो दिया जा रहा वो डिजिट पे दिया जा रहा. हाथ से जो लिखे हुए डिजिट्स 0 to 9 लिखे जाएंगे, उसको आप एनालिसिस करना है, उसको ट्रेन करना है, परसेप्ट्रॉन लिखना है, एंड कंक्लूड दैट
कि आपका पाइथन प्रोग्राम, आपका जो भी प्रोग्राम लिखा जा रहा वो रिकॉग्नाइज करेगा और आपको आउटपुट देगा, क्या वो 0 है, क्या वो 1 है, क्या वो 2 है. It will have 10 different suggestions, 10 different results. It could be one of those 10. तो इसके लिए आपको इंटेलिजेंटली प्रोग्राम लिखना है. देन लास्टली इसके रिलेटेड असाइनमेंट के रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस भी है, नोटबुक भी है. ईच ऑफ दोस हाइलाइटेड पार्ट्स आर मेंट फॉर क्लिक. आप इसको क्लिक करके आप और भी पढ़ सकते हैं. टू बी मोर स्पेसिफिक, you have also got a notebook next to the text part. You have got a lab as well. तो आप इसको क्लिक करेंगे, you get a notebook here. Which is a binary classification program के लिए क्या क्या इंपोर्ट करना है लिखा हुआ है, क्योंकि प्रोग्राम लिखने के लिए आपको कुछ तो इंपोर्ट लाइब्रेरीज इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो लिखा हुआ है. Then a toy problem is also there in this. Then आप ट्रेनिंग जब करेंगे तो आपका एक्स वाई एक्सिस पे कैसा डेटा आएगा वो भी लिखा हुआ है. और सपोर्टिंग एल्गोरिथम, सपोर्टिंग फंक्शंस जो हम पढ़े वो लिखा हुआ है. एंड द प्रोग्राम can be directly taken up into your Python editor. आप Python का जो भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं उसमें आप प्रोग्राम लिख करके आप चेक भी कर सकते हैं. Now here in the image there on the screen, somebody has written a 0, somebody has written a slash. So the algorithm should recognize this digit as 0 and the 1, because the student can write handwritten 1 as a little cross as well. Then 2, 5. So this is the complete algorithm, so that आपको उसका perceptron का output कैसा आता वो define हो रहा है. How would your error get minimized and how would you define that? So it is basically image recognition algorithm to define handwritten characters as 1 or a 0, 2 or a 5, 1 or a 0, 2 or a 5. इसको repeatedly बताया गया है. So this particular figures talks about somebody has written 1 or 0, 1, 4. 4 is not bold, but still you have to recognize. The first few things are bold as 1, 0. Then again, even if the color change doesn't matter you. आपको क्या करना है, color से नहीं करना है, बल्कि when you define that into cells, जब आप break करेंगे XY pattern में, तो वो cells के हिसाब से आपको define करना पड़ेगा. So this is the notes that you have to try the problem of image recognition for handwritten numbers, digits from 0 to 9. And this is a matrix of 0 to 25, 0 to 25. 25 times 25 matrix. If you look on the x-axis, it says 0 to 25. So it is nothing but a matrix of 25 cross 25. So it's a cells of, let's say, 500 cells. If you look into the lab part of this particular session, which is perceptron, which says multi-class classification with perceptron. अभी तो हम एक ही क्लास लिखे, इसमें मल्टी क्लास कैसे करते हैं वो लिखाया गया है. So it is all left to you to read this and do that assignment. एक जो हमारे पास जो नोट्स थे उसमें जो साइंटिस्ट ने किया है, recognition of one of the figures, either a triangle or a rectangle or a circle का दिया गया है, and lot of information is given to make sure that you implement this perceptron using Python for handwritten digits 0 to 9.
Hope you enjoy the session and do this assignment, and we hope we can go forward for the next class. Any questions? To help yourself for Python, you can Google out to find out uh, the the data types, the operators, the loops, ये सारे बेसिक चीजें जो आपको लैंग्वेज में होती हैं वो आपको डायरेक्टली पाइथन के बारे में ऑनलाइन चेक करके आप अपने आप को acquaint करना है, then you can get on to this. AI is talking about implementing algorithms using one of the programming languages. आप Python यूज करना जरूरी नहीं है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके आप implement कर सकते हैं. The session is about how to write algorithms for AI. So the first task in AI, जो पहला जो बेसिक टास्क होता है प्रोग्रामिंग करने का, वो परसेप्ट्रॉन ही का होता है. तो परसेप्ट्रॉन का जो आज सेशन हुआ, which is all about image recognition, and we are talking about this gentleman doing on three figures, especially triangle, square, and rectangle. This gentleman is Mr. Frank Rosenblatt, and he has done a hardware to implement this, and a replica of that using software is done by image processing. And this is a snippet or a snapshot of the program for that, and we are supposed to enhance our knowledge. हम अपना knowledge को use करके फिर हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा digits पे काम करेंगे, hand written digits पे हमको काम करना है. And algorithm should be intelligent enough to recognize the handwritten digits of 0 to 9, and the output of perceptron should give an answer कि क्या वो 0 है, yes or no, क्या वो 1 है, yes or no, क्या वो 4 है, yes or no, like this. So you should be able to tell us an answer. If you have written that, yes, you have done a great job. So neural networks will continue for another 3 sessions, 4th, 5th, 6th. So multi-layered perceptron is also to be taken up. Wait for today. We hope that you do that assignment, you do the challenge to design a program, to write a program for recognizing the digits. But before that, yes, we can try out this particular part of the program for triangle, rectangle, and circle. So my session ends for the day. Any questions? Shahnawaz, any questions? No, sir. Muzaffar, any questions? Okay. Can we close the session? Thank you.